हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में। Any equation of the form which tells us the relationship between the independent variables and dependent variables and also include their differential derivatives of one or more order. For example, we have an equation dy by dx is equals to x plus 3. In this equation, x is independent and y is dependent variable, and this is first order derivative. So this equation is differential equation. In this equation, only one independent variable and one dependent variable. Y is dependent on x because its value depend upon x. So this is an example of differential equation. Let's take another example. Now in this equation again, x is independent, y is dependent. Because we are derivating with x, so x is independent here and y is dependent and its higher order is 3. तो y का जो हमारे पास डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर है वो क्या है, 3 है। तो इस इक्वेशन में x फिर से क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ वी हैव अ डेफिनेशन फॉर differential equation. An equation involving unknown functions and their derivatives with respect to one or more independent variable is called differential equation. कि वो इक्वेशन जिसमें कोई फंक्शन हो और उसके साथ में क्या आ जाए, उसके डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हो, वो भी वन और मोर ऑर्डर के, और साथ में उसके पास क्या हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, तो वो इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स वी हैव अनदर एग्जांपल, curl z by curl x which is equals to z plus x curl z by curl y. In this equation we have two independent variables that are x and y. X and y are independent in this equation. Z is dependent variable in this equation. We have another example. Now in this equation again, x and y both are independent variables and z is only dependent variable here. That means x and y are independent, z is dependent. एज वी नो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज also known as ODE, that means ordinary differential equation, and partial differential equation को हम PDE भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग सेम होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एन इक्वेशन जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स विद रिस्पेक्ट टू इट जो इन्वॉल्व करे, वो इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जिस इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ में उसके डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव dy by dx is equals to x plus 3, this equation is ordinary differential equation because in this equation x is only independent variable and y is a dependent variable. Example for ordinary differential equation is dy by dx is equals to x plus 3. This is the first example. Second example we have d cube y over dx cube is equals to dy by dx.
Now, both the equations are ordinary differential equation. In the first equation, x is independent. X is independent variable and y is dependent, and it also includes differential derivative of x. Now, in the second equation, this equation can be written as d cube y over dx cube minus dy by dx is equals to 0. In this equation, x is also independent and y is dependent, and it also includes derivative of order 3. So these two are examples of ordinary differential equation. Definition for ordinary differential equation is an equation which involves one dependent variable and differential coefficient with respect to it is called ordinary differential equation. एज सच वी सीन इन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. इस इक्वेशन में x इज द ओनली वन विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड this equation also includes its differential coefficients. So this equation is an example of ordinary differential equation. Now we have to discuss about partial differential equation. अब हम बात करते हैं partial differential equation की. This equation involves two or more independent variables and partial derivative with respect to any of them is known as partial differential equation. अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें, we have curl z by curl x which is equals to z plus x curl z by curl y. This is the first example. These two are examples of partial differential equations. In this equation, z is dependent variable and x and y both are independent variables, and this equation also involves partial derivatives of x and y. Similarly, अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो इस एग्जाम्पल में भी z जो है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. z इज डिपेंडेंट एंड हमारे पास यहाँ पे है कर्ल x और कर्ल y. दैट मीन्स जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और y, इनके हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो आई होप आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.